नवी मुंबई नेटवर्क। कोरोना संक्रमण के बचाव का एकमात्र जरिया है कोरोना का टीकाकरण, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट सामने आने के बाद से शोधकर्ताओं व स्वास्थ्य विशेषज्ञों की चिंताएं अब लगातार बढ़ रही हैं। कोविड के अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट के सामने आने के बाद अब आम नागरिकों के जहन में भी ये शंकाएं पनप रही है कि क्या कोविशील्ड या कोवैक्सीन इन वेरिएंट का मुकाबला कर पाएंगी। तो चलिए आपके कंफ्यूजन को करते हैं दूर और बताते हैं कि ये दोनों ही वैक्सीन कारगर साबित होंगी या नहीं। दरअसल तमाम स्वास्थ्य विशेषज्ञों और डॉक्टरों का मानना है कि भारत में लगाए जा रहे कोवैक्सीन और कोविशील्ड कोरोना के सभी वेरिएंट के खिलाफ काफी कारगर है। हाल ही में इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक बलराम भार्गव ने मीडिया से बात करते हुए इस बात का खुलासा किया है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन SARS-CoV-2 के अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ बेहद कारगर है। उन्होंने कहा कि कोविशील्ड अल्फा से 2.5 गुना कम हो जाता है, जबकि डेल्टा वेरिएंट के लिए कोवैक्सीन ज्यादा प्रभावी है, लेकिन इससे एंटीबॉडी प्रक्रिया 3 गुना कम हो जाती है। बता दें कि भारत में फिलहाल 10 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 48 मामले सामने आ चुके हैं। अब सवाल ये उठ खड़ा होता है कि डेल्टा वेरिएंट के साथ क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट का भी मुकाबला ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन कर पाएंगी, जिसके जवाब में भार्गव ने कहा कि फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है और नतीजे 10 दिनों में सामने आ जाएंगे, जिससे इस बात का खुलासा हो जाएगा कि डेल्टा का मुकाबला करने वाले ये दोनों ही वैक्सीन क्या डेल्टा प्लस के लिए भी कारगर होंगे। So the variants of interest and variants of concern that we have first isolated. So now what happens is that you detect the mutant, you isolate it, then you culture it, you grow it. You grow it in the laboratory, then you test for vaccines, and people who have been vaccinated by different vaccines take their serum and test it on this culture medium in the laboratories. So we isolated the alpha in December 2020 for the first time in the world. We cultured it, first country actually to culture it in 20, and this was from UK returnees in Chennai. Then the P2 or the Zeta variant from UAE returnees in Mumbai, and then the Kappa, Delta, and the Delta Plus. Fortunately, we have been able to culture the Delta, and very recently we've also cultured the Delta Plus. And now we are testing in the laboratory whether the vaccines are effective against Delta Plus. We have enough data against Alpha, Beta, and Delta, which I will talk about shortly. That there is another variant of the Delta, which is called the Delta Plus, which is only in the receptor binding domain. There are another small 3 mutations that are occurring, and that is being characterized. And we have found the Delta variant increased cases, that is more than 25% of the cases in 16 countries where it is more than 25% of the total, which includes United Kingdom, United States, and several parts of right up to Australia. Now, here I want to tell, and I'd like you to focus on this slide, because this is talking about the reduction of the neutralization capabilities of the vaccine with the different variants. Now, this is based on global literature. So, Covaxin does not change with the alpha at all. Whatever it is with the standard strain, it is same with the alpha. However, Covishield reduces slightly, 2.5 times it reduces. The Delta variant, if you look at it, Covaxin is effective, but the antibody response is slightly reduced, 3-fold reduction, and in Covishield it is 2-fold reduction, while in Pfizer and Moderna it is 7-fold reduction. So the antibody response with these variants is reduced. However, you may have a vaccine which has antibody response here, and you may have an antibody, but that is reduced this much. You may have a vaccine which has an antibody response here, and that is reduced this much. So ultimately they will probably come out to be together. So Covishield and Covaxin work against the variants of SARS-CoV-2, alpha, beta, gamma, as well as delta. That is well established for these two vaccines. 48 cases have been identified in India and 12 Indian states. But more importantly, they have been very localized.
one patient here or 2 patients here or 7 here. So it is very localized. And this virus has also been isolated and has been cultured now. And we are doing the same test that we have done for alpha, beta, gamma and delta, looking at the laboratory test to check the vaccine effect. And this is ongoing, and we should have this results in about 7 to 10 days time, whether the vaccine is working against the delta plus. This will be first results in the world. It's not available yet anywhere. बता दें कि कोविड की दूसरी लहर अभी तक खत्म नहीं हुई है। अब भी 75 जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण की दर 10% से अधिक तथा 92 जिलों में 5 से 10% के बीच है। वहीं 565 जिले से संक्रमण दर 5% से कम आंकी गई है। ऐसे में इस नए वेरिएंट के चलते अब लोगों की जहां चिंताएं बढ़ रही हैं, वहां पर ये भी सवाल उत्पन्न हो रहा है कि क्या डेल्टा प्लस कोरोना की तीसरी लहर का कारण तो नहीं बन जाएगा, और क्या भारत में लगने वाली ये दोनों ही वैक्सीन डेल्टा के साथ ही साथ डेल्टा प्लस का मुकाबला कर पाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।